Assalamu alaikum. I am Ahmed Khalid with another interesting IoT project. So this project name is Underground Cable Fault Detection Project, this is basically a small prototype. It has an application in finding the fault or whether the wire is short or not in the underground cable wiring. So, but this prototype has some very cool features which can also be implemented in the real application as well. It has a system to send notification through SMS, through email, and also it has some text-to-speech system implemented in it as well. So whenever there are 4 stations given here, whenever we'll create the fault in any station, which means whenever we try to short any station, short the wiring, then it will send the notification through the speaker, through SMS and the email until the fault is not removed, until the fault is not finished. It will be continuously sending the SMS. So now let's see the demonstration of the project. So it is started with the welcome note, and currently it is saying that there is no fault is detected. Let's now create the fault at station 3. So I'm creating the fault at station 3. So at the station 3, fault is created. Fault has been detected at distance of 20 km from station 3. So it is saying that the fault has been detected at distance of 20 km from station 3, and it is also now displaying the fault as well. Let's see that have we received the SMS or not. 20 km from station 3. So we have also received the SMS that at 20 km from the station 3 the fault has been detected. Let's see whether we have received the email or not. So let's see here. I'm opening my email. See, the email is also detected here as well. So email is also detected here. Okay, so now let's create the fault at station 4 and switch 4. Warning, fault has been detected at distance of 80 km from station 4. So it will now show the notification that the fault is detected at 80 km from station 4, and now it will send the message until the fault is not removed. So the fault has been now removed. We have again received the SMS, and again we have also received the email as well. So the email has been also received, you can see here. So this is all about the project of the IoT cable fault detection. If you like this video, please like, comment and share, and thank you so much. दूसरी कमांड स्टार्ट हो गई है पाइथन 3 के नाम से। इसके बाद 3 के बाद स्पेस केबल cable.py, ये हमने कमांड कंप्लीट कर ली। सिस्टम रन करने के लिए हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये 2-4 सेकंड लेगा अपने सिस्टम को रीड करने में, उसके बाद सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वेलकम लिखा हुआ आ गया फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम का, और ये सिस्टम रन करना शुरू हो गया। मुबशिर भाई ये बताएं कि ये S1 के आगे जो NF लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? S सब स्टेशन 1 नो फॉल्ट, NF का मतलब नो फॉल्ट। इसी तरह सब स्टेशन 2 NF नो फॉल्ट, सब स्टेशन 3 नो फॉल्ट। स्टेशन ये सॉरी मादरत के साथ ये S1 और S2 S3 स्टेशन है, सब स्टेशन नहीं है। हमारे पास सिस्टम के अंदर 4 स्टेशन लगे हुए, तो ये उन चारों को बता रहे हैं आपको। स्टेशन को हमने नाम दिए शाह फैसल, गुलशन इकबाल, डिफेंस और मीठा दर। ये 4 हमारे पास स्टेशन है, और एरिया जो है वो है मलीर, लांडी, सरजानी। अब आपको फॉल्ट जनरेट करके दिखाते हैं। यहाँ से कमांड दी जा रही है फॉल्ट की। ये मैंने आपको फॉल्ट जनरेट करके दिखाया, और ये हो गया गुलशन मेमार का एरिया 1।
Warning. Fault has been detected at distance of 40 km from station 3. ये मैसेज भी आ गया हमारे पास, उस पर भी आ गया है मैसेज, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने ये बताना शुरू कर दिया कि फॉल्ट डिटेक्ट हो चुका है। इसकी ईमेल भी Fault ऑप्शन has been detected at distance of 40 km from अब station इस फॉल्ट 3. को रिमूव किया जा रहा है। ये फॉल्ट रिमूव हो गया। अब आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे स्टेशन इसने बताना शुरू कर दिए कि भाई सब स्टेशन से तमाम एरियाज की सप्लाई नॉर्मल है।